Types and design of fits. First, we will discuss basic hole system versus basic shaft system. In basic hole system, it's defined as a system of fits in which the design size of the hole is the basic size and the allowance, if any, is applicable to the shaft. तो यहाँ पे राइट साइड पे जो आपको फिगर नज़र आ रही है, इसका 3D व्यू है, ये उसका 2D व्यू है। तो ये जो 0.500 इज द बेसिक होल साइज है, ठीक है। और बेसिक होल सिस्टम की मदद से हम अपनी शाफ्ट की डायमेंशन को अप्लाई करते हैं, उनको टॉलरेंस अप्लाई करते हैं। इसको हम कहते हैं बेसिक होल सिस्टम। जैसा कि आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाई जा रही है कि टॉलरेंस आर यूजुअली बेस्ड ऑन द होल साइज बिकॉज होल्स आर यूजुअली फॉर्म यूजिंग स्टैंडर्ड टूल साइजेस। तो जो होल्स होते हैं वो स्टैंडर्ड जो हमारे रेमिंग के ड्रिलिंग के टूल होते हैं उनके थ्रू किए जाते हैं। तो अगर ऐसी असम्बली है जिसके अंदर आपकी शाफ्ट ने होल के अंदर फिट होना है, फिर आप उसको बेसिक होल सिस्टम के मुताबिक जो है वो टॉलरेंस अप्लाई करते हैं। Second system is the basic shaft system. A basic shaft system is a system of fits in which the design size of the shaft is the basic size and the allowance, if any, is applied to the hole. तो यहाँ पे जो basic dimension है वो आपकी shaft की है, that is 0.50, और इस shaft की मदद से हम अपने इस hole को tolerance जो वो apply करेंगे। सो जब आपने several parts को fit करना हो किसी single shaft में, तो tolerance जो है वो बेस करती है आपकी शाफ्ट साइज के ऊपर। तो हम फिर क्या करते हैं कि हम अपनी जो शाफ्ट है उसको ड्रा करेंगे, मतलब बेसिक शाफ्ट सिस्टम के अंदर जो हमारे डिफरेंट होल्स हैं जिन्होंने आपके उस शाफ्ट के साथ कनेक्ट होकर असम्बल होना है, तो क्या करेंगे हम कि हम इन होल्स की टॉलरेंस ऑन द बेसिस ऑफ दिस शाफ्ट जो है वो डिज़ाइन करेंगे। डेफिनेटली होल जो है वो आपका इस शाफ्ट की डायमेंशन से बड़ा होना चाहिए। अगर वो इस शाफ्ट के बेसिक साइज से कम होगा तो डेफिनेटली फिर वो उसके अंदर प्रॉपर असम्बल नहीं हो पाएगा या मीटिंग उसके अंदर प्रॉपरली नहीं हो पाएगी। So types of fit in general. A fit may be defined as the degree of tightness and the looseness between the two mating parts. So fits have three types. First one is the clearance fit, second one is the transition fit, and third one is the interference fit. Let's discuss one by one. Clearance fit. Clearance fit is one having the limit of size so specified that a clearance always result when mating parts are assembled, or minimum clearance should be greater than 0 in the case of clearance fit. So it permits the relative freedom of motion between a shaft and hole, like axially, radially, or the both. So such fit gives the loose joint as shown in the figure. You can see कि यहाँ पे हमारे पास एक होल है और यहाँ पे मेरे पास एक शाफ्ट है। तो जो क्लियरेंस है बिटवीन दिस होल माइनस शाफ्ट, यहाँ पे आपके पास 0 से बड़ी होगी रादर देन कि वो 0 से कम हो। इस फिट को हम क्लियरेंस फिट का नाम देते हैं। अनदर यहाँ पे इलस्ट्रेशन है जिसके अंदर मेरे पास एक शाफ्ट की अपर एंड लोअर लिमिट की डिमेंशन है एंड होल की अपर एंड लोअर लिमिट की डिमेंशन है। ये जो 7.7497 का डायामीटर है, ये मेरे पास मैक्सिमम डायामीटर है ऑफ शाफ्ट, और मिनिमम डायमीटर ऑफ शाफ्ट है 0.7493। और जो मेरे पास यहाँ पे टॉलरेंस है शाफ्ट की वो 0.0004 की है। सिमिलरली यहाँ पे ये मेरे पास मिनिमम और द डिज़ाइन साइज ऑफ होल है जो कि 0.7500 है, और ये मेरे पास मैक्सिमम डायमीटर ऑफ होल है दैट इज़ 0.7505। ठीक है, यहाँ पे क्लियरेंस फिट को शो किया गया है। तो ये जो गैप है ये मेरे पास मिनिमम क्लियरेंस है दैट इज 0.003, और ये मेरे पास मैक्सिमम क्लियरेंस है दैट इज 0.013। Interference fit. Interference fit is the one having the limit of size so specified that the interference always result when mating parts are assembled. So secure a certain amount of tightness between the parts whenever they are meant to remain permanently assembled or taken apart from time to time. Or two parts may be required to fit together suddenly
So without apparent tightness or looseness. So the narrative difference between the diameter of hole and shaft is called the interference, और जो maximum clearance है वो आपके पास less than or equal to zero in the case of interference fit. So in such cases the diameter of the shaft is always larger than the hole diameter. यहाँ पे मेरे पास इंटरफेरेंस या जो है वो माइनस के अंदर उसकी वैल्यू जो है रेज़ टू आप क्लियरेंस भी कहते हैं. सो होल माइनस शाफ्ट का जो डिफरेंस है वो लेस देन जीरो होगा. यहाँ पे इलिस्ट्रेशन की गई है अगेन होल एंड शाफ्ट की, और इसकी इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो मिनिमम मैक्सिमम उसके शाफ्ट के डायमीटर है और होल के डायमीटर और जो क्लियरेंस और टॉलरेंस और अलाउंस है वो यहाँ पे दिखाई गई है. Transition fit. A transition fit is one having the limit of size so specified that either a clearance or an interference may result when mating parts are assembled. Transition fits are the compromise between clearance and interference fit. And the maximum clearance for the case of transition fit is greater than zero. And minimum clearance for the case of transition fit is less than zero. Here you see the representation of hole and shaft. Again, it's a visual representation of hole and shaft with dimensions, their minimum, maximum diameter, shaft tolerance, maximum clearance, and so on. It's an exercise for you from everyday life. List some example of clearance and interference fit. First one, fit related to clearance, and then fits related to interference. So pause the video and answer this question. ओके, होपफुली आपने इस क्वेश्चन के आंसर जो हैं वो नोट कर लिए होंगे. तो मैं चंद एग्जांपल जो है क्लियरेंस की आपको बता देता हूँ. दैट इज डोर एंड डोर फ्रेम, कॉइन एंड कॉइन स्लॉट, लोड एंड की. दीज आर द क्लियरेंस फिट. और इंटरफेरेंस फॉर इसकी जो रियल लाइफ एग्जांपल है, पिन इन अ बाइसाइकिल चेन, हिंज पिन और वुडन पैड एंड द हैमर टॉय. ANSI standard fits. So the table of ANSI number 8A through 12 inclusively show a series of standard types and classes of fits on a unilateral hole basis such that the fit produced by mating parts in any one cases or class will produce approximately similar performance throughout the range of size. तो जो एनसी का स्टैंडर्ड टेबल्स हैं उसके अंदर हमें जो फिट्स की क्लासेस हैं वो यूनिलेटरल होल के बेसिस के मुताबिक दी गई हैं, और हम जब भी पार्ट को मेट करेंगे तो किसी भी वो क्लास से चाहे उसका रिलेशनशिप हो तो वो सिमिलर परफॉर्मेंस जो है थ्रो करेगा टू डिफरेंट रेंज ऑफ साइजेस. So these table prescribe the fits for any given sizes or type of fit, and they can also be prescribed the standard limits for the mating parts that will produce the fits. So selection of fits. It's really important. Selection limit of size for any application. The type of fit is determined first. कोई भी आपके पास एप्लीकेशन हो साइज के रिलेटेड, लिमिट ऑफ साइज से रिलेटेड, आपने हमेशा पहले उसकी फिट जो है वो डिटरमाइन करनी है बेस्ड ऑन द यूज़र और सर्विस रिक्वायर्ड फ्रॉम द इक्विपमेंट बीइंग डिज़ाइन. उसकी बेसिस पे फिर आप अपने इक्विपमेंट को डिज़ाइन करते हैं. So then the limit of size of the mating parts are established to ensure that the desired fit will be produced. इसलिए हम एनसी के स्टैंडर्ड की फिट्स को यूज करते हैं. सो डेजिग्नेशन ऑफ स्टैंडर्ड फिट कुछ इस तरह से है. स्टैंडर्ड फिट्स आर डिजाइंड बाय मींस ऑफ द फॉलोइंग लेटर सिंबल which facilitate the reference to class or fit for educational purposes. So the class of fits are arranged in three general groups. First one is the RC running and sliding clearance fit. Second one is the rotational fit, that is rotational clearance fit, rotational transition or clearance or interference fits. L and rotational interference fit. एंड थर्ड नंबर पे जो हमारे पास है दैट इज एफ एन फोर्स एंड शरींट फिट्स. So these letter symbols are used in conjunction with numbers representing the class of fit. Thus, F and 4 represent a class for force fit.
Each of these symbols, two letters and a number, represent a complete fit for which the minimum and maximum clearance or interference and the limit of size for the mating parts are given directly in the tables. Here is a quick summary table for all types of fit types, that is clearance, rotational and interference, their symbols and their subtypes. So running and sliding fits are indicated to provide a similar learning performance with suitable lubrication allowance throughout the range of sizes. And the clearance for the first two classes use as slide feet increase more slowly with diameter than the other cases, so that the accurate rotation is maintained even at the expense of free relative motion. Similarly, rotation के यहाँ पे थ्री डिफरेंट सब टाइप्स हैं और इसको यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है और इंटरफेरेंस को भी यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है.